Welcome to Testnet Prep. So there's a big update that CUET PG registration has started. CUET PG 2025 registration has started. Now, in this video, we are very specific of all the important things that we have to discuss. First of all, we'll go into detail ki what exactly the CUET PG admission process is, because many students have queries ki यहाँ पे कॉलेज अप्लाई करना है, कौन कौन से कॉलेज अप्लाई करना है, फिर कॉलेज में कैसे काउंसलिंग होगा एंड सो ऑन. सो विल डिस्कस दैट. कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस, टिस एडमिशन इन अ स्पेसिफिक कि टिस अपना एडमिशन प्रोसेस कैसे फॉलो करता है, बिकॉज देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, central universities, private universities, state universities taking admission through CUET PG. So we'll be TIS specific. We'll discuss about the courses and the paper code for the particular courses that you will have to apply for. New changes has come up. TIS के admission process में for certain courses new paper codes have been added. So that's a good thing, and we can also look into what are the drawbacks for students with respect to that. Also, new courses have been added to TIS. We'll also look into those courses, and definitely some FAQs would be taken at the end. I request you that watch this video completely, and still if you have any queries, then do put it in the comment section. Please do not ask the same thing which is already covered in this video and you're asking it again in the comment section. It makes no sense. So we'll just take 5-10 minutes to get you through. So TIS admission process, CUET PG admission process has started. So CUET PG से admission कैसे होता है? So it's a generic thing कि कैसे किसी भी कॉलेज में CUET PG के थ्रू कैसे जाते हैं. So first of all, you will have to fill the CUET PG application form. CUET PG application form देना होगा, fill up करना होगा. You know, the form fill up will happen. You'll have to choose those courses, those paper codes whose admission to the corresponding courses in the particular college. So you'll have to look into the details of each of the college and the courses and what particular course admission is through which particular paper. So you'll have to do that research. Okay, so that's already there in the CUET PG portal. How to do that research we'll take up in the another video. So in this form filling process, we'll have to select the paper codes and of course the colleges that you want to apply for. So after the form fill up, normal thing will happen that you will take the exam. Now you can take at max 4 paper codes, means you can take 4 paper code exams. So 4 paper code, you'll have to give 4 exams on different dates. So at max 4 paper codes. It may happen that through these 4 paper codes you are eligible to apply for 40 courses. That doesn't matter, but at max you can apply for 4 paper code. For example, let's say if you select COQP 11 paper code, and let's say you're just talking about TIS, so maybe you'll be able to or eligible for at least 12-15 courses of TIS. Okay, so you'll have to select those courses as well. So while filling the form, you will get all those things. So what I mean to say that 4 different paper codes you can select. Now the result will come, and through this result you will have to separately apply to the other colleges that you want to take admission to. It is not by default that your admission would be through CUET PG or through the NTA exam that you have conducted. You will have to now separately apply to the colleges. So you will have to separately apply and separately pay to the college for your application, है ना, वरना तो फिर sincerity of the applicants पता ही नहीं चलेगा कॉलेज को, आप कहीं भी ऐसे ही अप्लाई करते रह जाओगे, and it would be very tough for them to do the counseling process and shortlisting, right? So आपको जितने भी कॉलेजेस हैं आपको सब में जाके फिर अलग से भरना रहता है, ये रिजल्ट आने के बाद या आने से थोड़े पहले. ओके, CUET PG सिर्फ एक एग्जाम है, आप एग्जाम दोगे, वो स्कोर को लेके you can go to the colleges accepting those score. What are those colleges, what are those universities, you can check it on the official CUET PG 2025 website. Okay, so this is one thing. तो आपको जो कॉमन क्वेरी है कि क्या इसी फॉर्म से आप सब जगह एलिजिबल हो जाओगे, मगर आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा.
सो फॉर एग्जांपल टेस्ट में भी आपको फिर सेपरेटली यू विल हैव टू पे एंड अप्लाई टू द कोर्सेज। वहां पे कुछ कॉलेजेस रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं कि आप 3 कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, 5 कोर्स में कर सकते हो पर्टिकुलर कॉलेजेस में, राइट, बट नॉट एट दिस स्टेज। एट दिस स्टेज यू कैन एट मैक्स सेलेक्ट 4 डिफरेंट पेपर कोड्स, सारे पेपर कोड का अलग अलग एग्जाम होता है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। सो लेट्स क्विकली लुक इनटू द इंपॉर्टेंट डेट्स दैट वी हैव। कल से स्टार्ट हुआ है, रात से 2 जनवरी to your last successful transaction that you would be doing for your application, पूरा 1 month मिला है। so do your proper research कि कौन से कॉलेज में कौन से कोर्सेज हैं, क्या चांसेस हैं, you can do that। करेक्शन विंडो है 2 दिन का, वो करोगे, आपको सिटी पता चल जाएगा। by first week of March you'll be able to download the admit card 4 दिन पहले। they do not give you a good window time कि आपको 15 दिन पहले पता है। फॉर सिक्योरिटी रीजन पेपर लीक्स वगैरह बहुत आसान हो जाता है अगर आपको पहले से सेंटर पता है, तो सेंटर मैनेज करना एंड ऑल। सो फॉर दीज रीजंस दे हैव गिवन डन दिस थिंग। एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत सारे पेपर कोड्स हैं, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 100 पेपर कोड्स इन सीईटी पीजी। सो ये पूरे 13 मार्च से लेके 31 मार्च तक एग्जाम चलते रहता है इन डिफरेंट स्लॉट्स, ओके। सो जिस भी पेपर कोड के लिए आपने अप्लाई किया है अकॉर्डिंगली आपको डेट्स और स्लॉट्स मिलेंगे। हाँ, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी स्लॉट आपके साथ कंसाइड नहीं करेगा, है ना। सो दैट इज वाई दे हैव गिवन यू एट मैक्स 4 पेपर कोड्स कि अगर आप 4 पेपर कोड के लिए कर रहे हैं तो कभी भी डिफरेंट स्लॉट्स ही आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन के एक स्लॉट में 2 एग्जाम है, दैट विल नॉट हैपन, ओके। सिमिलरली रिस्पॉन्स शीट आएगी, रिजल्ट आएंगे एंड देन यू विल बी अप्लाइंग टू द वेरियस कॉलेजेस टेकिंग एडमिशन थ्रू सीईटी पीजी। सो दिस द होल टिपिकल प्रोसेस। नाउ फीस कितना है? फीस काफी हो गया है। मैक्सिमम 2 कोर्सेज के लिए आप 2 पेपर कोड के लिए, नॉट कोर्सेज, 2 पेपर कोड के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, एक के लिए भी किए या 2 के लिए भी किए, you'll have to pay 1400. Further, if you add 1 paper, you'll have to pay 700. So let's say you are applying to 3 paper codes, you'll be paying 2100. 4 paper codes, you'll be paying 2800. But definitely there is some concession for the category student OBC EWS. आप देख सकते हो. This is it. This is for students outside India. Anyway, so this is about the application fees for CUET PG. ये CUET PG के application charges है जो आप एग्जाम देने के लिए करते हो, ठीक है? Anyway, now we'll look into the TIS admission process. जैसे कि बताया कि कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो रिजल्ट होने के जस्ट पहले या रिजल्ट होने के बाद ही शुरू होता है, मेजरली जस्ट बाद शुरू हो जाता है। आपको स्कोर आ चुका होगा, then you will be applying to the colleges. TIS usually allows that you can maximum apply to 3 courses. TIS के 3 courses में आप अप्लाई कर सकते हो। This is a later stage to think of कि कौन से कोर्स में अप्लाई करें, बट अभी तो सोचना ही पड़ेगा एटलीस्ट कि कौन से पेपर कोड आपको देने हैं। बट यू नो कि TIS में जब आप जाओगे अप्लाई करने के लिए तो 3 पेपर कोड तक आप जा सकते हो, 3 कोर्स तक आप जा सकते हो। You can apply to maximum 3 courses. Now, your score will be taken. आपको कट ऑफ डिक्लेयर होगा। हर कॉलेज का अपना कट ऑफ है अपने कोर्स का। If you clear the cut off, then you will be called for the OPI. So, which is a combination of 2 things: extempore and interview. ये एक सिटिंग में ही होता है। यू एंटर द इंटरव्यू हॉल एंड दैट्स हॉल इज अ वर्चुअल हॉल थ्रू अ जूम मीटिंग। इट्स एन ऑनलाइन थिंग, कंप्लीटली ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। you'll be given a topic, you'll have to speak on that particular topic for 2-3 minutes. That's your extempore and further it would be your interview. So एक ही सिटिंग में आप दोगे। Now very important, ये जो स्कोर आप लेके आओगे ना CUET PG का, so till last year, because अभी तक TIS का details of CUET PG admission has not come up. जो वेटेज है टोटल सिलेक्शन में 75% इज योर CUET PG एग्जाम, जो भी स्कोर आप ला रहे हो, and the remaining 20% is here. Okay, 25% is for this interview. So this makes a
ये बहुत बड़ा वेटेज है, राइट? 3/4 ऑफ योर एग्जामिनेशन, योर सिलेक्शन प्रोसेस इज थ्रू योर marks that you'll be getting in your CUET PG, and 25% is for this particular process, that is your extempore plus interview. अच्छा, कुछ कोर्सेज में GD भी होते हैं, कुछ कोर्सेज में, हर कोर्सेज में नहीं, कुछ कोर्स में GD होते हैं, 2-3 कोर्सेज हैं, बाकी मेजरली सारे कोर्सेज में एक्सटेम्पोरे प्लस इंटरव्यू है. इस साल कुछ चेंज करें यहाँ पे, वी डू नॉट नो, बट इट्स लेस लाइकली टू हैपन. So this is the admission process of TISS. This will start after your result. Okay, so you'll have to apply for TISS after that CUET PG result. Now let's see. Acha, very interestingly, these are the list of the MSW courses at TISS Mumbai campus. So पिछले साल क्या हो रहा था कि सारे MSW courses ना सिर्फ COQP 11 पेपर कोड से हो रहे थे. COQP 11 is a general paper, general aptitude paper, which covers English, mathematics, everything, right? So it's a general paper. But इस साल they are allowing other domain specific papers कि इस पेपर को भी किसी ने लिया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं. But these are domain specific. So let's say HUQP 18. So this is a political science paper. आप सिलेबस देख सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ऐड हो जाना, सारे पेपर कोड के सिलेबस हम दे देंगे. इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इंटरनेट. इफ यू आर फाइंडिंग इट टफ, तो दैट्स अवेलेबल. प्लीज डू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल डिस्कशन कैन हैपन. HUQP 21, दिस इज अ पेपर कोड विच इज कंप्लीटली डोमेन स्पेसिफिक फॉर MSW, सोशल वर्क का. जो BSW पढ़े होंगे उनके सिलेबस से बहुत हद तक मैच करता है. But they have opened general paper, that is COQP 11, for all these students. Means all these students can easily apply through COQP 11. It's open for all these students irrespective of their background, because not everyone would be able to take HUQP 18. Okay, now please do not get confused कि आपको 3 पेपर कोड्स देने होंगे. आप तीनों में से कोई एक देना होगा, because all these 3 paper codes are acceptable. तो please do not have that confusion कि आपको इस particular course के लिए 3 पेपर देने हैं. No, you have to take any one of them. Now you'll ask me how did I get this information? This is right there on the CUET PG website. I'll share the link. Join the WhatsApp group. We'll share the link. आप देख लेंगे. I don't think कि बहुत लोगों ने explore किया and it has come to the notice. तो ये पेपर हैं, दिस इज ऑल फॉर दी MSW. अगर आप यू डू नॉट हैव द बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस या BSW, इट इज मच बेटर कि आप COQP 11 की तैयारी करें, प्रिपरेशन करें. ओके, वी डू हैव द कोर्स फॉर इट. इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन इट. अगेन दैट लिंक विल आल्सो बी गिवन इन द व्हाट्सएप ग्रुप और इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. सो दिस इज फॉर दी ऑल दी MSW कोर्सेज. दिस इज फर्दर अगेन दी MSW कोर्सेज. आप देख रहे होंगे कि 3 पेपर कोड के थ्रू अब एडमिशन होगा. पिछले साल तक सिर्फ एक पेपर कोड, दैट इज COQP 11 के थ्रू होता था. इंटरेस्टिंग. सो दिस इज अ बिग चेंज दिस ईयर. नाउ लेट्स सी मैनेजमेंट कोर्स. सो मैनेजमेंट कोर्स में क्या चेंजेस आया है? जो चेंज है वो हाईलाइट कर रखा है. नॉर्मली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप COQP 12, दिस इज द मैनेजमेंट पेपर ऑफ CUET PG. Labor studies and practices, again the most sought out course, one of the most sought out course, again COQP 12, that is the MBA aptitude paper. Now disaster management के लिए earlier it used to be just COQP 12. Now they have added COQP 11 or COQP 9. Okay, so this is again a domain specific. ये domain specific paper है. That's related to disaster. Okay, COQP 11 is general paper, COQP 12 is management paper. Now the most sought out course, analytics, is still with COQP 12. Disaster and climate risk assessment, these are self finance course, तो इसकी फीस ज़्यादा होती है, तो that is through COQP 12. Let's see further. MPH कोर्स, बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि MPH कोर्स के लिए तो वो जाएंगे CUET PG वेबसाइट पे, they'll see कि एक पेपर कोड है COQP 19. So they think that COQP 19 से TISS का एडमिशन होगा. No, that's not the case. Admission to TISS, CUET PG or TISS MPH courses is through COQP 11. Common repeated query इसलिए अलग से बनाकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. TISS का MPH is through COQP 11. हाँ,
There are other colleges as well, you can check on the list, that take admission to their public health courses through COQP 19. But I would suggest कि जितने भी other colleges हैं उनकी seats बहुत कम हैं in terms of placements and other parameters, they don't stand anyway close to the TIS MPH. So you must prepare for the COQP 11 because the number of seats are good. It has a alumni base, it's an old course, good placement, all opportunities, so it's easy to prepare for COQP 11. Now, education courses जो हैं TIS के, you can see the list of the education courses. Earlier it used to be through SIRF COQP 11, but now they have added 2 domain specific papers, that is COQP 03. Again, all the syllabus of these paper codes will be shared on the WhatsApp group. You can join it. It would be in the link in the description section. So you can see COQP 11, COQP 15, and for this specific they have added SCQP 09. So you can check if you are interested in these courses. You can apply or prepare for these particular paper codes. I would suggest, because COQP 11, if you see, it's a common course. सारे ही course ले रहे हैं, है ना? So it's better to prepare for COQP 11 because you prepare for one paper, you become eligible to many papers, many courses. But still आपके अपने choices हैं. Now ये एक बड़ा change है. This is a big change. Again, one of the most preferred course है TIS का, खास करके वो लोग जो environment के लिए हैं. So environment, climate change and sustainability के लिए पहले domain specific paper था. If I remember, SCQP 11 paper code था, SCQP 11. Now they have changed it, so it's a big change. Many people would not even look into it and get into detail, and it will become too late. तो दोनों paper code, that is the MBA paper and this is the general paper, दोनों के through आप admission ले सकते हो. So this is a big change. Kindly check it. All this information is coming through from the official CUET-PG website. I'll do share the link on the WhatsApp group. You join it or in the description section as well. Now, all the policy and governance courses, जैसे regulatory policy है, water policy, urban policy and governance, women's studies, library sciences, all are through COQP 11. So if you notice, good number of, let's see further. Now, the governance courses in Hyderabad campus, okay. So natural resources and governance, public policy and governance, city and governance, livelihood, gender and development, master of arts, livelihood, rural development. So earlier it used to be just through one paper code, that is COQP 11. COQP 11. Still it is through COQP 11, but they have taken up 2 other paper codes. So this is HUQP 22. This is, I think, sociology paper code. This is domain specific. Again, you can choose any of these 3 to apply for it, but it is better that, you know, if you do not have the background of sociology, it's easy to prepare for COQP 11 because it includes basic English, mathematics, general awareness, computer awareness, logical reasoning. So unless and until you have an edge in these specific paper codes, you know, do not take these paper codes to apply for it. Okay, so all the syllabus of each of the paper code would be shared on the WhatsApp group. Do join that. If you want to prepare for COQP 11, you can take up our course. It's, you know, very nominally priced and everything would be provided for your preparation. Anyway, so this is for the Hyderabad campus courses. There are a few other courses in Hyderabad campus. Let's see. Now, there are courses in TIS which are completely, they just take domain specific for the obvious reason. So, this is psychology, HUQP 20, applied psychology, clinical and counseling, that is HUQP 20. Media and cultural studies is through COQP 17. This is a media domain specific paper. LLM access to justice is through COQP 14, which is completely a law paper, again a domain. Now let's look into the courses of Guwahati campus. So earlier all these courses were through just same paper code, again through COQP 11. Still they are taking admission through COQP 11, but they have added other paper codes. So let HUQP 18, that's a political science paper code. This is an MSW paper code. Interestingly, now if you look into this MSW counseling, they have taken up HUQP 20, which is a psychology domain specific paper code.
or the social work paper code, and of course COQP 11 is common paper. So if you prepare for COQP 11, you are eligible. You are eligible. It's just that it has given advantage to people who are already from the domain specific and they found it really tough to prepare for COQP 11, the general paper code. So they don't have to do this. But what would be the cutoff now for those paper codes? We don't know, because that would be happening for the first time. Anyway, तुलजापुर कैंपस में मास्टर कोर्स के लिए सिर्फ एक ही कोर्स है, दैट इज द रूरल डेवलपमेंट कोर्स. नाउ इस कोर्स में देयर इज नो COQP 11, HUQP 20 दैट इज साइकोलॉजी, HUQP 21 that is MSW domain specific, HUQP 22 that is sociology. So this is the only paper code of only course which is not taking COQP 11, irrespective of the other courses. Now 2 programs have been added this year. So TIS has added botany, MSc botany. So again it's a domain specific botany course, and they have added a very interesting course of agriculture through LAQP 01 and SCQP 01. Both of them are completely domain specific papers. You can again find its syllabus. Join the group, you'll get the syllabus. You can Google it and find its syllabus. So these are the 2 new programs or courses of TIS. Now, so there are diploma courses. Diploma courses are 1-year course. 2 diploma courses they have started last year, so they have added this year as well. Both of these are in Hyderabad campus. There is 1 diploma course in education as well. We have seen that. So again, they are taking COQP 11, also the domain specific COQP 10 and HUQP 22, which is sociology. So if you want to do diploma, again these are self-finance. So roughly around fees of 3 to 4 lakhs fees is there. I don't know if they are changing the fees this year or not. So these are self-finance courses of 1 year. Do not expect much from this. Now, so that's all for TIS. That's all for CUET PG admission process, TIS admission process. कट ऑफ क्या होगा? प्लीज डोंट आस्क कट ऑफ. लास्ट ईयर के कट ऑफ्स कुछ बता सकते हैं? अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. बट एवरी ईयर कट ऑफ इज चेंजिंग. कट ऑफ इज डिपेंडेंट अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. सो सिर्फ कोई लास्ट ईयर के कट ऑफ से आप बहुत कुछ बना लो, दैट्स नॉट पॉसिबल. यू विल हैव टू ट्राई टू गेट द मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल. COQP 11 बहुत ही इजी पेपर है, मतलब इजी पेपर है इफ यू इन्वेस्ट टाइम एंड प्रिपेयर फॉर इट. इट्स नॉट टफ टू गेट गुड स्कोर. अगर अभी भी देख लो तो 2.5 महीने का टाइम है. यू कैन डू इट, यू कैन ईजिली डू इट इफ यू इन्वॉल्व एटलीस्ट 4-5 आवर्स. तो अगर आप सोच रहे हो तैयारी शुरू करने का, इट्स नॉट एट ऑल लेट. ठीक है, बहुत हाई कट ऑफ कोर्सेज नहीं है. रफली अराउंड 200 आउट ऑफ 300 पेपर. An easy paper, it's easy to score if you prepare well. आप टाइम दोगे तो बिल्कुल प्रिपरेशन हो जाएगी. Depending on what background you come, you will definitely get some edges in the certain sections of COQP 11. We do have the course. You can check it out. You can contact us on the WhatsApp. All the links are there in the description section. Again, ये confusion मत रखना कि 3 पेपर कोड है तो तीनों एग्जाम देने हैं. तीनों में से कोई एक देना है. जैसे कि मैंने सजेस्ट किया, अगर आपको एक डोमेन पे स्पेसिफिक नहीं हो या आपका ग्रेजुएशन नहीं है, लेट्स से सोशियोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस में, सो इट्स बेटर टू गो विद द कॉमन पेपर कोड, दैट इज द COQP 11, द जनरल पेपर. इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अप्लाई फॉर मेनी अदर कॉलेजेस एंड इट्स अ डूएबल पेपर. लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर अवेयरनेस. सो थोड़ा सिलेबस लंबा है बट हो जाता है. ठीक है, so we provide all these study materials, classes, video lectures, anything apart from what we have not covered. Still if you have any queries, I'll share this PDF of this PPT on the WhatsApp group. You can have it. Okay, and that is pretty much. You can ask your queries in the comment section. We'll happy to help you out. That's all. Let's start your preparation. It's just 2.5 months now. You can easily do it for whatever paper code you want to do, but you'll have to give time. You'll have to commit time. At least a time of 4 hours should be there so that you are able to completely prepare for it. Thank you.